Exercise 4B, question number 3, part 4. LCM 864 after multiplying prime divisors. Question number 4, find the lowest number divisible by 15, 20 and 25. So by division method, 5 3 times 15, 4 times 20, 5 times 25, 3 1 times 3, 4 as it is, 5 as it is, 2 2 times 4, 2 1 times 2, 5 as it is, 5 1 times 5. After multiplying prime divisors, we get 300. So LCM is 300, lowest number. That is divisible by 15, 20 and 25. So 300 is the lowest number. That is divisible by 15, 20 and 25. Now question number 5. Find the lowest number between 200 and 500, which leaves a remainder of 3 in each case when divided by 8, 10, 12 and 30. अब इसमें हमने ऐसा लोएस्ट नंबर फाइंड करना है जो 200 और 500 के दरमियान हो, और अगर उसे 8 से 10 से 12 से या 30 से डिवाइड किया जाए तो हर केस में हमारे पास 3 रिमाइंडर रहता हो। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम एलसीएम लेंगे इनका 8, 10, 12 और 30 का। एक्सरसाइज 4B क्वेश्चन 5, find lowest number between 200 and 500 which leaves a remainder of 3 in each case when divided by 8, 10, 12 and 30. So the required number is LCM of 8, 10, 12 and 30. Two is a prime divisor, can divide 8, 10, 12 and 30. 8 2, 4 times 8, 5 times 10, 6 times 12 and 15 times 30. 2 2 times 4, 5 as it is, 2 3 times 6, 15 as it is, 2 1 times 2, 5 3, 15, 5 1 times 5, 5 3 times 15, 3 1 times 3, 3 1 times 3. So LCM is equal to product of all prime divisors. 2 multiply 2 multiply 2 multiply 5 multiply 3, 2 2 times 4, 4 2 times 8, 8 5 times 40, 14 to 3 1, 20. So here 120 is less than 200 and we required a number between 200 and 500. So the required number also be divisible by the LCM of 8, 10, 12 and 30. So we check multiples of 120. 120, 240, 360, अगर तो ये जो मल्टीपल है हमारे पास 8, 10, 12 और 30 का, ये डिवाइड होगा 8, 10, 12 और 30 से, तो इसके जो मल्टीपल हैं वो भी डिवाइड हो सकते हैं। सो यहाँ पे फिर हम 240 ले लेंगे जो कि 200 से ग्रेटर है और 500 से स्मॉलर। अब यहाँ पे जो
लीस्ट नंबर है हमारे पास वो 240 है, बट अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन स्मॉलेस्ट नंबर लोएस्ट नंबर बिटवीन 200 एंड 500 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3, कि जब वो डिवाइड हो 8, 10, 12 और 30 से तो हर केस में 3 रिमाइंडर भी रहता है उनके पास। तो अब यहाँ पे 240 कम्प्लीटली डिवाइड होगा 8 से, 10 से, 12 से, 30 से, तो हर केस में जब 3 रिमाइंडर रहना है तो फिर हम वो 3 इसमें ऐड कर लेंगे। सो द रिक्वायर्ड नंबर is equal to 240 plus 3, which is equal to 243. Question number 6. Find the smallest number which when divided by 12, 15, 18 and 27 leaves as remainder 8, 11, 14 and 23 respectively, कि जब वो नंबर 12 से डिवाइड हो तो 8 रिमाइंडर रहता है, 15 से डिवाइड हो तो 11, 18 से डिवाइड हो तो 14 रहता है हमारे पास, 27 से डिवाइड हो तो 23 रिमाइंडर रहेगा। तो वो जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा इनका एलसीएम होगा। So first we will find LCM of 12, 15, 18 and 27. LCM is 540, but according to given condition, when it divided by 12 leaves a remainder 8, when it divided by 15 leaves a remainder 11, 14, 23 respectively. So first we check the difference between each case. 12 minus 8, 4, 15 minus 11, 4, 18 minus 14, 4, 27 minus 23, 4. So difference in each case is 4. So here we subtract 4 from 540 because in each case the remainder is different. So the required number is, difference in each case is 4, then the required number is 540 minus 4, which is equal to 536. Now question number 7. Find the smallest number of 4 digit which when divided by 40, 50 and 60 leaves a remainder of 5 in each case. The 4 digit number divisible by 40, 50 and 60 will also be divisible by their LCM. First we find LCM of 40, 50 and 60. 40, 50 and 60. Here we have to find smallest number of 4 digit, but LCM is 600, that is 3 digit number. The smallest 4 digit number is 1000, so we divide 1000 by LCM, that is 600. So 600 1 times 600. So the smallest 4 digit number divisible by 40, 50, 60 is 600 plus 600, that is 1200, 1200. But we required a smallest number which when divided by 40, 50 and 60 leaves a remainder of 5 in each case, कि हर केस में जब उसे डिवाइड किया जाए 40, 50 और 60 से हर केस में 5 रहे तो इसमें हम 5 ऐड कर लेंगे. So the required number is 1200 plus 5, which is equal to 1205, that is 1205.
सो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन 8, 9, 10 to 14 ये सारे करेंगे।